Bappi Lahiri, un parmi les derniers géants des années 1970. Dans le commencement des années 1980, un jeune musicien qui s'est fait sensation dans l'Inde et qui a une bonne partie dans le monde, avec la musique qui est composée pour un film qui s'appelle Disco Dancer. Ce jeune musicien-là s'appelle Bappi Lahiri. Il est né à Kishore Kumar. Bappi Lahiri qui déjà fait remarquer avec la musique de Zogmi qui sortit en 1975. Ce film-là qui compose une série de super hit songs, dont parmi Hobby Hobby, Thi Dushmani, interprété par Lata Mangeshkar, ou encore Jalta Hai Jiya Mera Bhigi Bhigi Raton Mein, interprété par Kishore et Asha Bhonsle. Donc à dire c'était un début de tenue pour un jeune musicien comme Bappi Lahiri. Mais si vous écoutez la musique là bien, vous trouvez qu'il est fortement inspiré par la musique de Odi Burman. भीगी भीगी रातों में आजा गोरी छोरी छोरी अब तो रहा नहीं जाए रे हाय रे हाय रे हाय रे. En fait, même avant ce film-là, Bappi Lahiri était déjà composé une chanson pour un film hindi qui s'appelle Nanha Shikari, un film qui sorti en 1973. Chanson-là est interprétée par Mukesh. Après Zogmi, Bappi Lahiri développe son propre style et au remarqué avec une chanson qui est composée pour Chalte Chalte, film qui est sorti en 1976. Une fois encore, tout le monde chanter ce film-là, une bande super hit. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है छोटी सी बात का फसाना बन जाता है प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है छोटी सी बात का फसाना बन जाता है. En 1977, Bappi décroche un autre hit mémorable avec Bombay Se Aya Mera Dost, Dost Ko Salam Karo, dans le film Aapki Khatir, avec son propre la voix. बम्बई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो बम्बई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को. Bappi Lahiri répète ça en 1978 avec le morceau Mana Hotum Behad Hassin, interprété par KJ Yesudas dans le film Tout est Khilone. माना हो तुम बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं. En 1979, Bappi Lahiri rejoint une certaine Mithun Chakraborty. C'est une rencontre qui vous fait tous les deux une superstar. D'abord, Bappi compose la musique de Suraksha. Le film-là a 6 morceaux et chaque morceau vient un super hit. Par exemple, Dil Tha Akela Akela, interprété par Bappi Lahiri et Lata Mangeshkar, Mausam Hai Gaane Ka, interprété par Bappi Lahiri et Annette Pinto, ou encore Tum Jo Bhi Ho Dil Aaj Do, interprété par Bappi et Dil Rajkaur, et surtout Grandmaster G9, interprété par Bappi et Annette Pinto. La musique disco commence à régner. दिल था अकेला अकेला साथी मिला अलबेला सपने में भी सोचा ना था अपना कोई बन जाएगा. जो भी हो दिल आज दो कल ये समा फिर हो न हो. En 1981, Bappi retrouve Mithun pour Vardad, la suite de Suraksha. Encore une fois, le succès est au rendez-vous. और करना तो जरूरी है जिंदगी वरना अधूरी है अब मेरा क्या रहा. En 1982, c'est la consécration pour le duo Bappi, Mithun Chakraborty. The Join pour Disco Dancer. La musique Disco Dancer connaît un succès extraordinaire dans l'Inde comme dans l'Asie du Sud, centrale et de l'Est, l'Union soviétique, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, la Turquie, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest.
Disco Dancer est le premier film indien qui rapporte 1 milliard de roupies indiennes dans le monde. Mithun Chakraborty est un nom connu dans toute l'Asie du Sud et l'Union soviétique. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Jimmy, acha acha acha, Jimmy Jimmy Jimmy, acha acha acha, acha re mere साथ, ये जागी जागी रात, पुकारे तुझे सुन, सुना दे मोरी La musique de Disco Dancer vient disque de platine en Inde, soit 1 million de disques vendus, et disque d'or en Chine. Après, Bapi et Mithun collaborent pour un film comme Kasambaida Karnewaleki, qui sorti en 1984, Dance Dance, qui sorti en 1987, et Commando, qui sorti en 1988. En 1985, Bapi compose la musique de Tarzan. Dans ce film-là, Bapi interprète le fameux morceau Dilele, qui fait un succès extraordinaire. Tout ce film-là, tourné par le même directeur qui Disco Dancer, soit B. Subhash. कभी कभी गलियों में हंसी में आओ झूम नाचो गाओ मस्ती में ले आयो आयो ले Bapi pas compose la musique seulement pour un film Mithun. Par exemple, il compose une musique extraordinaire pour un film avec Amitabh Bachchan qui s'appelle Namak Halal, sorti en 1982. Tu peux se répéter ça avec Sharabi, sorti 2 ans après. ये पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे इन घुंघरू के ओ दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार Quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent, c'est que Bapi Reddy pas un film forme un duo extraordinaire seulement avec Mithun, mais aussi avec Prosenjit Chatterjee, qui est garçon acteur des années 60, qui s'appelle Biswajit. Zut Amar Sanghi, qui est sorti en 1987, reste à ce jour un des bandes plus gros succès de tous les temps du cinéma bengali. চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। छोड़ भी ये नखरा करो प्यार हमसे, आया है मौसम मस्ती का झूम के। छोड़ भी ये नखरा करो प्यार हमसे, आया है मौसम मस्ती का झूम के। मेरे जैसी हसीना का दिल यहाँ जिससे मिल जाए, हाँ मेरे जैसी हसीना का दिल यहाँ जिससे मिल जाए। हरि ओम हरि 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 हरि ओम हरि। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। Bapi Lahiri, de son vrai nom Alokesh Aparesh Lahiri, né le 27 novembre 1952 à West Bengal, il quitte nous le 15 février 2022 à l'âge de 69 ans. Après avoir composé la musique de plus qu'une centaine de films en langue hindi, sans oublier un film régional.